Hello everyone, this is Ravina here and I welcome you all to RKP online classes. Dear students, today we will discuss the practice assignment that was given to you as holidays homework. But we will not discuss each and every question of the assignment. We will discuss only those questions in which you might have faced problem while solving. So first such question is question number 4. The sum of predecessor of greatest 4-digit number and largest 6-digit number. You need two things: predecessor of smallest 4-digit number and largest 6-digit number. So, smallest 4-digit number, how we will write? We will take the help of 1 and zeros. First we will write 1 and then we need to put zeros. How many? We need 3 more zeros to make this as 4-digit number. So we will put here 3 zeros. Right? So this is the smallest 4-digit number. Now what will be its predecessor? For predecessor, we will subtract 1 from 1000 and we will get 999. This is the predecessor of smallest 4-digit number. And what is the largest 6-digit number? Largest 6-digit number will be written with the help of 9s. और 9s हम कितने times लिखेंगे बेटा? 6 times, because 6-digit number we have to make. Written? So this is 9,99,999. Now we have to find the sum. For finding sum, first we need to write them properly. Means what I mean by writing properly means ones place digit of one number should be below the ones place digit of second number. ऐसे ही टेंस प्लेस डिजिट के नीचे सेकेंड नंबर का टेंस प्लेस डिजिट होना चाहिए. So let us write. This is 9,99,999. अब आपको 999 लिखना. So where you will write? Here or here? Ones place को आप ones place के नीचे लिखेंगे, tens place को tens place के नीचे और 100 place को 100 place के नीचे. And now simply add. You will get the sum. Okay. Now next is question number 7. Question number 7 में आपको क्या करना है बेटा? You have to estimate the difference between 74,582 and 65,382. You have to estimate the difference by rounding them off to nearest thousands and then compare it with the actual difference. Means पहले आप इसे राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट थाउजेंड्स एंड देन फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस. आफ्टर दैट कंपेयर इट विद द एक्चुअल डिफरेंस. सो लेट अस राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स. नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट वी विल फाइंड द राउंडिंग डिजिट. राउंडिंग डिजिट क्या होगा? 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो 1000 प्लेस डिजिट क्या होगा? राउंडिंग डिजिट. वंस, टेंस, 100, 1000. दिस विल बी द राउंडिंग डिजिट. नाउ see the immediate right digit of the rounding digit, that is 5, और immediate right digit बेटा अगर 5 है या 5 से greater है तो आपको यहाँ 1 ऐड करना है, otherwise as it is छोड़ते हैं आप इसे. So in this case it is 5, so we will add here 1. This will be written as it is and right side digits of the rounding digits will be 0. So it will be 75,000. Now rounding of this to nearest thousand. This will be the rounding digit. Immediate right digit is 3, which is smaller than 5. So we need to add here 1. No, we will write this digit as it is and 6 also as it is. These 3 will be 0. So it will give you 65,000. Right? Now for finding the difference, subtract them 0, 0, 0, 0 and 1. We got 10,000. So this is the estimated difference and these are the estimated values. Now what is the actual difference beta? Actual difference 2 minus 2 0, 8 minus 8 0, here 2 and here we will get 9 and here 0. So this is the actual difference. Okay. So now actual difference, estimated difference. Compare both of these. Which one is greater? Estimated difference is greater, right? Now, question number 8th beta. This was question number 7th. Question number 8th.
you have to estimate the product of 56 and 77 by rounding 56 number up and 77 second number down. इसे राउंड अप करना है और इसे राउंड डाउन करना है. सो व्हाट डज इट मीन? 56 राउंडिंग अप बेटा, 56 राउंडिंग अप become, you have been told already, up means आपको नेक्स्ट नंबर पे जाना है. सो इट विल बी 60 and 77 राउंडिंग डाउन. डाउन मीन्स आपको इससे स्मॉलर पे जाना है. So that will give you 70. And now find the product. That will be the estimated product. Right? Now see question number 16th beta. In question number 16, you have to use the suitable properties to solve the given questions. Okay, so let us start. See, this is the part B of question number 16th. How we are going to solve? Before solving this, see this one beta. How you used to solve this? If it is 6 multiplies 7 plus 5. If it is like this, how you solve it? You multiply 6 with 7. We used to write it 6 multiplies 7. First group. Sorry, here plus sign should be there. Now we will put here plus sign and then 6 multiply with 5. Right? आप ऐसे ही सॉल्व करते थे इसे. So try to compare with this. If I try to make here groups, one more number is required here. और वो कैसे लिखेंगे हम? देखिए बेटा, ये तो सेम नंबर प्रेजेंट है दोनों ग्रुप्स में. दिस इज द सेम नंबर प्रेजेंट इन बोथ द ग्रुप्स. हियर शुड बी समथिंग इन मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर किससे आप मल्टीप्लाई करें कि इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े बेटा. You can multiply it with 1. It will be as it is. Now, यहां से आप बैक स्टेप पे आइए बेटा. यहां पर किस फॉर्म में लिखा है? जो सेम नंबर है, that is written here. Then this a multiply we are doing, so multiplication, or you can simply use the bracket. Then first number, sorry, the number left from the first group, this plus sign, and the number left from the second group, right? So यहाँ पे भी हमें यही करना है बेटा. सबसे पहले the number which is present in both the groups, that is 7, 8, 9, 6. Now multiply with bracket start करेंगे बेटा. Now which number is left from the first group? This one. So we will write here 999. Then this sign as it is. Which number is left from this group? 1. Now it will be 7, 8, 9, 6 multiply with 1000. Now you can multiply them very easily. I hope it is clear. You have practiced it a lot. Now see part number D beta. Part number D में आपको क्या करना है? 25 multiply 5 multiply 4 multiply 200. But before proceeding, once come back, which property we have used here beta? When we multiply this and this and keeping this sign as it is, which property is this? This is distributive property. Do mention here. Okay. Now come to part D. Here are only multiplication sign. There is no plus sign. So distributivity तो हम नहीं यूज कर रहे हैं बेटा. यहाँ हमें सिर्फ इसे इस तरीके से अरेंज करना है कि हम इजिली मल्टीप्लाई कर सके. वन वे तो यही है कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो. बट नो, वी वांट द इजियर वे. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? आई टोल्ड यू कंबाइन दोज नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट से आपको यूनिट डिजिट क्या मिले? 0. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 25 विद 4, तो 4 5 जा 20 होता है. यूनिट डिजिट 20 का क्या है बेटा? 0. तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से आपको यूनिट डिजिट 0 मिलेगा. सो विल ट्राई टू राइट दीज टू टुगेदर. सो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है? जस्ट इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ दीज टू. 5 हियर एंड 4 हियर. Okay, so 25 multiply 4 multiply 5 and this 200 as it is. आपने क्या किया बेटा? सिर्फ इन दोनों नंबर्स की पोजीशन को चेंज किया. एंड विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ मेक द ग्रुप.
25 into 4 will give you 100. Multiply 5 into 200 will give you 1000. Now you can easily multiply these two.